तो गाइस आज चिकमंगलूर का सेकंड डे है और हम लोग निकल रहे हैं मुल्लायनगिरी के लिए, जो कि हाईएस्ट पीक है कर्नाटका का। तो चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं। सो लेट्स गो। चाय की टपरी की है तो चाय पियेंगे एंड यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। तो चलिए पहले भगवान जी की दर्शन करते हैं। आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगा बट देयर इज नो गेट विदाउट पेन। सो यहाँ पे आप आओगे अपना सारा पेन भूल जाओगे। इतना मस्त व्यू है, पूरे क्लाउड चारों तरफ फ्लोट हो रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा क्लाउड क्लाउड। और यहाँ पे ये कर्नाटका का टॉप मोस्ट पॉइंट। और यहाँ से आपको आने के लिए अगर आप खुद के व्हीकल से नहीं आना चाहते, आप यहाँ पे टीम करनी है जो कि 300 रुपीज लेते हैं तक पहुँचाने का। 300 रुपीज अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो ये पार्किंग स्पेस है।
आप एनीमिक पेशेंट हैं या फिर अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर अभी अभी रिकवर हुए कोविड-19 से, तो प्लीज़ मत जाना क्योंकि यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड है। जैसे ही आप जाओगे वैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो मैं भी एनीमिक हूँ, तो मुझसे भी पूरा एटीट्यूड चढ़ा नहीं गया, मैं वापस आ गई आधे रास्ते से। हम लोग जा रहे हैं अपने कार की तरफ, जो कि हम लोगों ने पार्किंग की थी, और वापस से हम लोग सितलायनगिरी आ गए। और फिर हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा है वह है वाटरफॉल। तो चलिए अपने वाटरफॉल में आप लोगों को मिलती हूँ। और मुल्लायनगिरी हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम सोच रहे हैं दोबारा फिर से प्लान बनाएंगे।